Hello बच्चों, let's read this question. Which of the following is incorrect regarding Gibbs free energy? It is state function, it is an extensive property, it is a macroscopic property and it is an intensive property. So सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. As we can see, the question is about the Gibbs free energy. So the key concept will be the same, that is Gibbs free energy. Gibbs free energy. एंड बेसिकली ये एक फ्री एनर्जी है और वी कैन से इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द वर्क डन है सिस्टम में, थर्मोडायनेमिक सिस्टम में, जब टेम्परेचर और प्रेशर जो है कांस्टेंट रहता है. सो वी कैन राइट द सेम. इट इज द मैक्सिमम वर्क दैट ए thermodynamic system can perform at a constant temperature and pressure. Constant temperature and pressure. And the Gibbs free energy जो है it is a state function है, which means it only depends on the initial state क्या होगी और final state पर depend करेगी. does not depend on the path followed by the system, and depends on initial and final state only. Initial and final state. एंड जो हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी है दैट इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, वन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड द अदर इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है विच आर द इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. डिपेंड्स upon the amount of substance in given thermodynamic state. So the Gibbs free energy जो है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है. सो इट इज द स्टेट फंक्शन. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस. एंड जो गिब्स फ्री एनर्जी है दैट इज ए मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी. एंड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं विच आर बेसिकली एसोसिएटेड विद द मैक्रोस्कोपिक सिस्टम. एंड मैक्रोस्कोपिक सिस्टम इज बेसिकली दैट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, एटम्स और द आयंस. एंड now let us see the given option. According to the given option, the first it is said that कि ये स्टेट फंक्शन है, सो ये तो करेक्ट है, सो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता. द नेक्स्ट इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड वी हैव सीन कि ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, सो इट इज द करेक्ट वन, सो दिस कैन नॉट बी द आंसर. द नेक्स्ट इज द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी. वी हैव सीन दिस इज द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, so this cannot be the answer. And option D says that it is an intensive property. We have seen कि ये एक extensive property है, and intensive property वो होती है which does not depends upon the amount of the substance. So the answer of this question is it is an intensive property. So let us mark the option D as the final answer of this question. Hope you understood it well. Best of luck.